It is something, the first time that I got the script, जब मैंने पहली बार script पढ़ी, I was like, damn, this is something that you cannot miss. I think it's उसके साथ मैंने इतना समय बिताया है कि it's a switch on and switch off. I will never be able to explain you this in words. मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा the amount of gratitude and the amount of thankfulness that I feel. मैं यही करने आया था, मैंने यही शुरू किया था ना. मतलब तुम मुझे एंकरिंग करते हुए देख रहे हो तो तुम क्या भूल गए? मतलब ये मेरा काम है. मुझसे आप मुश्किल से मुश्किल किरदार करवा लीजिए, मैं जीवन दे दूंगा उसके लिए, लेकिन मुझसे वो शो नहीं हो पाएगा. बहुत मुश्किल है ये अपनी जगह. Well, I have a very special guest with me today. Ritvik, firstly, welcome to Telechuck and congratulations. Cartoon looks quite the promising one. Thank you very, very much. Means a क्या lot. बताना चाहेंगे? Because I was very excited when I saw the promos and I was like, oh, this is something to be watched out for. What was your experience? Exactly the same. It is something, the first time that I got the script, जब मैंने पहली बार script पढ़ी, I was like, damn, this is something that you cannot miss. And बहुत समय चला गया यार, due to COVID, due to so many problems that we faced while the entire last one and a half year of the pandemic that we all were going through. But with God's grace, touch wood, with Bappa's blessings, we're out now. Finally, the show's completed, and we're ready for the world to take this in and understand what we've been working on for so long. Okay, अपने किरदार के बारे में अगर हम बात करें तो उसके लिए सबसे मुश्किल चीज क्या थी जो you had to adapt for your character? Like, you know, For me, see, Abhay is not me at all. Abhay जिस तरीके का इंसान है वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ. The way he talks, the way he walks, the way he behaves, the way he reacts is not me. तो I think just to सबसे पहला तो to get the lingo right, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था. Why I'll tell you is because it becomes very difficult because otherwise बहुत thin line है. Either it becomes caricaturish or either it becomes trying too hard. yeah. So I didn't want that to happen. So to get that note right was one of the most difficult tasks that I had to go through. But then how difficult was it for you to come out of your character? Because character में जाना इतना मुश्किल नहीं होगा जितना अपने आप से अभय को अलग करना था. तो वो मुश्किल था या आसान था? I don't think अभय मुझसे अलग हुआ है अभी भी. अभय is still a part of me. I think it's उसके साथ मैंने इतना समय बिताया है कि it's a switch on and switch off. Like I can be Abhay right now if I wanted to because it's a part of me. It's a creation of me. So it will never be out of me is what I feel. And as an actor, I always believe कि वो जिस switch on switch off की मैं बात कर रहा हूँ वो होना बहुत ज़रूरी है because you can't take Abhay home. Yes. I can't go back as Abhay to my mom and dad and मैं तोड़ दूँगा, मैं फाड़ दूँगा, चीर दूँगा, मम्मी जूता मारेगी घर पे. But did your parents see the trailer? What was their reaction? Honestly, my mom and dad have been out of town. They've just come back 2 days ago. और उन्होंने ट्रेलर देखा है. But I haven't been able to like sit with them and watch the trailer with them to get to know कि वो क्या feel कर रहे हैं, उन्होंने क्या समझा या क्या. तो I'm gonna go. Thank you for reminding me this. I'm gonna go back home right now to mom and dad and I'm gonna see what they feel like and I wanna know. Okay, well, I can see a lot of characters behind you and I know कि आपके कार्टून में एक ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि 6 रोल्स निभाए हैं, like Divya. Right. But if I would ask you, if given an option, would you want to play only Abhay या फिर क्या आप कोई और किरदार को try करना चाहेंगे? Absolutely, only and only Abhay. There is nothing else that I would want to play. I don't want to change. I don't want to trade Abhay for anything. But then जैसे दिव्या के 6 कैरेक्टर्स हैं, क्या आपका अभय भी हमें कोई नया रूप दिखाने वाला है या सिर्फ अभय ही देखने को मिलने वाला है? नहीं, बिल्कुल दिखता है. अभय की भी एक जर्नी है. अभय भी अपने आप को बदलता है थ्रू द शो. उसकी भी एक कहानी है. वो जो है उससे वो क्या बन जाता है, उसकी कहानी है पूरी. People who start their journey, they have a lot of expectations. Fans की उनसे काफी होती है, लेकिन आपकी जर्नी स्टार्ट नहीं हुई. You have been in the industry for long, so fans की expectation कुछ ज़्यादा बड़ी है, पवित्र रिश्ता डेज से अब यहाँ कार्टल पे हम पहुँच गए हैं. Right. So fans का रिएक्शन क्या था जब उन्होंने कार्टल की प्रोमोज देखी, ट्रेलर्स देखे, and then how did they react to it? I mean, I will never be able to explain you this in words. मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा the amount of gratitude and the amount of thankfulness that I feel for all the love that I get from my fans. And thanks to Pavitra Rishta because all the love that has been showered upon me from Pavitra Rishta, वो आज तक with God's blessing, it's still with me. So they are equally, I think, in fact, even more excited than I am. मतलब they're celebrating each and every look and a dialogue and the promo which is out there. They're all
Have you guns seen and memes? Have you seen any memes on yourself? You know, from the promos itself. Not yet. No, not yet. But वो भी बनेंगे. I'm pretty sure कुछ ना कुछ तो निकल के बनेगा उसमें से. And I'm still waiting for that. But immense amount of response, mad response from fans and otherwise also for people who have not seen me like as an actor. I'm coming back after a couple of years, but 3-4 years is what this project has come out. So a lot of people had completely forgotten कि ये एक्टर भी है. तो सडनली लोग आके बोलते हैं यार तुम तो एक्टर भी हो, तुम तो कमाल के एक्टर हो. मैं बोला दोस्त मैं एक्टर ही हूँ भाई. मैं यही करने आया था, मैंने यही शुरू किया था ना. मतलब तुम मुझे एंकरिंग करते हुए देख रहे हो तो तुम क्या भूल गए? मतलब ये मेरा काम है. So that's a refreshing change कि I'm still able to bring that shock value, that newness for people कि उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नया है. So I'm really happy about it. बदन अगर मैं वही बात करूं, अपने पवित्र रिश्ता की बात की, वो भी वापस आ रहा है अपने न्यू सीजन से नए चेहरों के साथ. So क्या अगर मौका दिया जाएगा, would you still want to be a part of पवित्र रिश्ता season 2? Like Absolutely. In a jiffy, in a blink of an eye. बहुत कमाल की कहानी है and it's one of the most important shows that has made me who I am. So in any and every capacity जो मुझे मौका मिले, I would love to be a part. Because कहीं ना कहीं जब सुशांत और अंकिता की जोड़ी को पसंद किया जाता था तो आपकी और आशा की जोड़ी को वहीं से फर्स्ट इंस्टेंस था जो फैंस ने तब प्यार दिया था. तो अगर मौका दिया जाए तो क्या आप लोग उसके जरिए फॉर द शो वुड यू बी बैक रिकिंडलिंग द सेम जोड़ी फॉर द फैंस, या फिर किसी तरीके से यू वुड वांट टू बी देयर? I would in any and every capacity if मुझे मौका दिया गया अर्जुन को फिर से जिंदा करने का और अर्जुन पूर्वी को फिर से जिंदा करने का. Of course, having said that, if Asha would like to still be a part of that, why not? मतलब it's Arjun and Purvi that has made the both of us. So I'm always and forever in awe and in love of that character and that jodi. So for sure, yes. But अगर बात करें अपनी कार्टल की ही, तो यहाँ पे काफी सारे कलाकार हैं, तो आपकी सबसे ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग किस अदाकारा या किस एक्टर के साथ सबसे ज्यादा अच्छी? I think मेरे दोनों भाइयों के साथ, I have to say, with Tanuj and with जीतू भाई. हम तीनों भाइयों की ही कहानी है और हम तीनों भाइयों की जो तिगड़ी है. आई थिंक आई एम इन लव विद दैट. बट ऐसा कौन था सेट पे जो कभी भी अपने रियल सेल्फ को छोड़ता नहीं था? दैट जैसे यू से दैट अभय अभी भी आप चाहें तो स्विच इन स्विच ऑफ कर सकते हैं. तो ऐसा कौन थे एक्टर जो ऑलवेज अपने मोड में रहते थे, हमेशा अपने कैरेक्टर में ही घुसे रहते थे? नहीं यार, सारे एक्टर्स बहुत ही कमाल के स्विच ऑन स्विच ऑफ आर्टिस्ट्स हैं. सो आई डोंट रियली सी अन्ना. आई थिंक आई वुड लाइक टू से वो मोर और लेस वो हमेशा कहीं ना कहीं आपको उनमें अन्ना की एक झलक हमेशा नज़र आती थी. हालांकि वो बहुत ही काम और बहुत ही प्यारे इंसान है. बट आई थिंक जब भी मैंने उनको देखा तो मैंने हमेशा मुझे अन्ना ही नज़र आया. But I think there's one more actor I would say जो कि अपने किरदार के अंदर बिल्कुल डूबी हुई थी, and I would say that is Monica. Man, Monica Dogra, oh my God. I cannot begin. मैं आप ये पूरा दिन निकल जाएगा अगर मैं मोनिका के बारे में बात करूँ तो. First thing first, I'm a huge fan of her craft. She is brilliant. She is such a phenomenal actor and of course a singer par excellence. I think she's a true performing artist in every sense of the word artist. And I am so glad and so thankful that she even said yes to do Maya. What a performer, Mon. I truly I love you from the bottom of my heart. You're so freaking But I think जो आप यहाँ पे अपने फीलिंग्स जता रहे हैं that you love her work or maybe you're smitten by the work that she's doing. I think वो आपके पेज पे, आपके पोस्ट पे वो दिखाती नजर आती है that the real self is still there. पोस्ट के ऊपर she's saying that you are Abhay is only Kartal का, Angre का, like I saw those posts and I'm like, oh God, she's too much into her character, or maybe what is actually going on with I think see, because also off screen Abhay और Maya जो हैं, which is Ritvik and Monica, we're really she's a really close friend. She is and I'm always have been in awe of her. तो हम I think हमारी वो जो बॉन्डिंग जो खतरों के खिलाड़ी से शुरू हुई थी, which was Pain and Spain, तब से हमारी जो दोस्ती शुरू हुई है वो I think आज तक उतनी ही कायम है. Okay, who is that one person जिसके साथ सबसे ज्यादा उम्दा सीन आपका आया है जो we'll see when we'll actually Monica. watch? Monica. And what was that scene? If you could just literally brief. I can't give you any brief. Like थोड़ा कुछ. It's one of my most favorite scenes, and once the show releases is when I'll be able to tell you more about that scene. And Mon exactly knows what scene I'm talking about. Mon. आपके कार्टल की दुनिया से ही दो ऐसे कलाकार हैं जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल दुनिया में कदम रख चुके हैं, दिव्या अग्रवाल और आपके दोस्त राकेश.
उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? Because you know यहाँ पे even though Divya has been a part, but then she's entered into a show that's quite the controversial one, and she's playing pretty well now. So आपको क्या लगता है कैसा चल रहा है? यार, I wish them all the best. It's not an easy show. It's a very, very difficult call for anybody to take, and I think both of them have a lot of courage to be able to, go in that house and, face their fears. Of course, everybody's fearful. I'm fearful of a constant eye on my my daily 24 hours. So yeah, it takes a lot of courage, and I really I respect both of their courages, both of their strength that they've actually said yes to a show like that. I really wish them all the best, दोस्तों. Go nail it out of the park. But I would say that जब हम लोग ये लाइन कहते हैं the ball is in your court, और जब एक्टर्स के कोर्ट में बॉल दी जाती है तो वो काफी बार ऋत्विक दंजानी का नाम देते हैं कि उनको बिग बॉस में होना चाहिए है. तो आपका क्या कहना है? कभी I don't know कौन कहता है यार ये. बहुत एक्टर्स हैं, हमारे पास फुटेजेस हैं जो कहते हैं कि अच्छा आप किसको देखना चाहेंगे, अगर आप किसी को ले जाना चाहेंगे तो ऋत्विक और मे बी नकुल और मे बी like they give names, Arjun, they want you people to be there. So like should we expect or what is it like? No, sorry, मुझे माफ करें, मैं नहीं कर पाऊंगा वो. मुझसे आप मुश्किल से मुश्किल किरदार करवा लीजिए, मैं जीवन दे दूंगा उसके लिए, लेकिन मुझसे वो शो नहीं हो पाएगा. बहुत मुश्किल है दोस्तों. I can't. Honestly, I'll be very honest, I don't have the courage to do that. But then show. if you were given a chance to go inside the house or as either of their connections for Yeah, I mean absolutely. I love Rakesh, and मैं अभी कह भी रहा था थोड़ी देर पहले, I was talking to someone, गणपति जी आ रहे हैं from the 1st of September. I'm going to start making the मूर्ति and I'm going to really miss him. So if I get a chance कि अगर वो वहाँ पर अंदर घर में मूर्ति बना रहा होगा, I would be more than happy to be associated with him only for those few moments. I would love it. I would totally love it. बहुत मेहनत के बाद, 2.5-3 साल की मेहनत के बाद हमारा शो which is Cartel releasing on the 20th of August on MX Player Gold and on Alt Balaji. Please इसको ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा सपोर्ट दें. And please tell us what you think about it. It's a magnanimous story. It's a larger than life approach to a show. So I really hope आपको पसंद आए. And please watch and please tell me what you think about it. MX Player Gold and Alt Balaji, 20th of August. Don't forget. Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.